Hello, Dr. Pargat Singh, sir. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. Yes, ma'am. Please go ahead. Yes, sir. We'll start soon. Okay. Hello, Dr. Pargat Singh, sir. Shall we start now? Yes, ma'am. Yes, please go ahead. Yes. Okay, good morning, sir, and good morning, all the participants. On behalf of Vidyalankar Polytechnic, I welcome you all for this faculty development program on NEP 2020, organized by Vidyalankar Polytechnic. Today's topic is new curriculum and pedagogical structure in school and higher education. And speaker for the day is Dr. Pargat Singh Garcha. Sir is working as a principal in GHG Khalsa College of Education, Hursar, Sudhar. Dr. Sir has also over 15 years of experience in teaching and research. He has completed master's degree in educational technology, economics from Punjab University, Chandigarh, master's degree in psychology from IGNOU, PGDCA from Punjab Technical University, and doctorate in education from Punjab University, Chandigarh. Sir specializes in teaching education, cooperative learning, educational technology, and research methodology. He has to his credit 9 books and more than 40 publications in various journals on diverse area in field of education. He has attended or presented papers at over 40 conferences and seminars at national and international level. He has delivered more than 60 invite talks. He has guided more than 19 students in MEd research dissertation and evaluated MEd dissertation and PhD thesis of some reputed institutions in India. His name is also glorifying the editorial board and member of reviewers committee of some reputed journals. He is also editor of Research General, GHG Journal of Sixth Thought. He is also working on the minor research project funded by the University Grant Commission, New Delhi. In the field of open educational resources, he has contributed by developing massive open online courses on cooperative learning under a project from UNESCO. Sir has also participated in various conferences, workshops, faculty development programs in the field of educational technology. As a college principal and secretary of Punjab and Chandigarh chapter for Council of Technical Education, he has organized several seminars, webinars, conferences at state, national as well as international level. He has also served as the member of Academic Council of Punjab University, Chandigarh, and presently Sir is member of Punjab University Sports Committee and also providing his services as NAC assessor to NAC. Sir is also a social activist. He works with NGO societies and donated his body organ along with his wife through Mohan Foundation on March 2017. So welcome Dr. Pargat Singh, sir, and thank you for accepting our invitation. Over to you, sir. You can start the session. Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to say thank you to all the team members who are organizing this particular FDP. So I'm really thankful to the Vidyalankar Polytechnic Institution, head of the institution, and the organizing team for giving me an opportunity to discuss some of the points of NEP 2020 with the participants. It is nice to read the name of the college. It speaks about the quality of the institution. On the other hand, we have to analyze how many colleges out of 41,000 in our India are doing the same. What type of education they are providing to our future generations or the future citizens
each one has to do the self-analysis. So I'm happy to see the growth of your institution and your hardworking team. At first sight, the new education policy, which is the main topic of today, provide a forward-looking framework for transforming Indian education. When we see the 66-page document, you will find that new education policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, its curriculum, its pedagogy, and including regulation and governance. The NEP 2020 proposes the need for fewer regulations, more autonomy, better teaching, learning methods, better assessment policies, more meaningful examination. It seems that policy is giving India a vision for the future. I think many sessions are already conducted around the theme. And in today's session, our main focus will be on school education and higher education in context of the curriculum and the pedagogy. So by considering all the general points about the NEP 2020, from a word's eye view, it looks promising. It looks very visionary. The schooling years are divided into several sections with program outcomes specified for each level. It talks about focus on discovery, preparation, abstract thinking, and multidisciplinary learning, and that with technology, intensive use of technology. It is probably redefining everything around us. चाहे वो आप स्कूल की बात करो, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करो, it is going to redefine everything. So we must know the basic points of NEP 2020 to adapt ourselves to the new changes which are going to affect each and everyone, each and every person, each and every stakeholder of school education as well as the higher education. So we have to see the document very carefully. The document lays down objectives. The strategy has yet to come, because on 29th July 2020, the policy was officially implemented, and it is the first just completed for 1 year. And we have to wait for the detailed structure, the detailed strategies by the each department, which will be mainly affecting our institutions. There is yet another promise of a new regulator, a new research foundation in higher education. A lot will depend upon the norms. What kind of norms these bodies will made, which will be affecting schools and the colleges and the universities. So जब आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हो, 66 पेज के डॉक्यूमेंट को, it is very forward looking, it is very visionary, it is very promising. बट जब उसको ग्राउंड लेवल पे हम यूज करेंगे, जब उसके नॉर्म्स रेगुलेशंस बनकर आएंगी, जैसे जैसे वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता जाएगा, we will see the more about these 66 pages practical things. So if the government is able to implement most of the recommendation on school education as well as the higher education, then no one can stop India to become an empower India. The future will belong to India. So the NEP is expected to deliver the much awaited demographic dividend that experts have long spoken out. As we know that the various reports are saying that we are the youngest nation. So for any nation, the population plays a vital role. The population can be an asset or the population can be a liability. वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है population. If your population is educated,
then it can contribute a lot in the development of any country. अगर आप जापान की एग्जांपल लो, जब वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी का सारा हैपनिंग होती है, तो नो वन हैज इमेजिन कि जापान इतनी जल्दी इतनी बड़ी त्रासदी से, इतने बड़े वो अटैक से बाहर निकल पाएगा. बट यू कैन एनालाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जापान. They invested a lot on their population. They have invested a lot to make their population a skilled labor. So we are nowadays seeing the growth and development of Japan. And अगर आप इस कंट्री की पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एनालाइज करते हो, यू विल फाइंड के जितना उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे, जितना उन्होंने अपनी यूथ पे इन्वेस्ट किया, नाउ द कंट्री इज गेटिंग बैक. So I mean to say that India is the youngest nation as per the different reports, as per the book of Shri APJ Abdul Kalam ji, Vision 2020. It also talks about how we can harness this young population advantage. We have this advantage. If we will plan properly, then we can do wonders in the coming years. अगर आपने उस पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन को एक एसेट बनाना है अपने कंट्री के लिए, देन योर स्कूल एजुकेशन एज वेल एज द कॉलेज एजुकेशन मस्ट बी इन सच अ वे कि वो उनकी जो पोटेंशियल्स हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, उनको बाहर लेकर आ सके. तो अगर आप पॉलिसी को देखते हैं NEP 2020, इट टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स. It talks about the vocationalization from 6th class onward. अगर आप 6th class से बच्चों को vocations की तरफ लेकर जा रहे हो, that is good thing. And in the colleges or universities also it talks about the holistic education. So all these things are very catchy things. I really appreciate the words and the lines written in the NEP 2020 in the 66-page document, but the real test will be on ground. When these words, when these recommendations will be implemented on ground in schools, in colleges, so we have to wait and watch how it is going to affect us. So let us move to the presentation and have a look at the data of different colleges and universities. I'm starting with one slide. I will be sharing my screen. I think screen is visible. Anyone can help me to... Yes, the screen is visible. Okay, fine. And one more request to all the participants that I have planned 10-20 minutes in the end for the questions, but you all are most welcome to ask any question through the chat box or by unmuting yourself in between the session also. Because अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पूरी 1-1.5 घंटे की बाद 90 मिनट की टॉक में आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि वी वांट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यू कैन आस्क मी. आई थिंक एज ऑर्गेनाइजर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड टू मी, आई विल ट्राई टू बी बायलिंगुअल. शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश. आपको कहीं पे भी लगे कि और हिंदी की रिक्वायरमेंट है, वी कैन शिफ्ट मोर टुवर्ड द हिंदी. सो इन बिटवीन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन थ्रू द चैट बॉक्स. Sometime if I will not be able to read the chat box, anyone from the organizer can help me to answer the particular question of the participants, because this session is organized for you people. If you will not enjoy, then there is no fun to carry on the so-called lecture to you peoples. So हम डिफरेंट बातें जो NEP 2020 की स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में है और हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट पे है, उस पे कन्वर्सेशन कर रहे होंगे. तो दैट कैन बी अ कन्वर्सेशन, इंटरेक्टिव टॉक.
So now the responsibility is on your shoulders. All the participants are humbly requested to participate in the session, ask as many questions as you can. So we are moving to the first slide. This is a slide related to higher education. No doubt in the presentation, first of all, I will be focusing upon the school education. Then in the last half an hour, I will focus on higher education. But I would like to start the first slide with the higher education data. In the screen, you can see that 2 years data is shown. One is आयशा 2018-19 का डाटा है और दूसरा डाटा आपके सामने आयशा की रिपोर्ट का 2019-20 का डाटा है, जिसमें से आप देख रहे हो कि हमारे पास 1000 से ज्यादा मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज है, अराउंड 42,000 कॉलेजेस है, जिनमें से मोर देन 11,000 कॉलेजेस आर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस. सो दिस इज द words eye view about the higher education in India. अब इस हायर एजुकेशन को हैंडल करने के लिए जो बच्चों ने स्कूल सेक्टर में से हायर एजुकेशन में आना है, इन सभी को डील करने के लिए दिस NEP 2020 is framed. We got this policy after around 34 years. लगभग 34 साल के बाद हमें ये नेशनल लेवल की पॉलिसी दी गई है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं. अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसके कितने एस्पेक्ट को हम एक्चुअल में अचीव कर पाएंगे, कितने एस्पेक्ट को एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाएंगे. अगर हम 1964-66 की पॉलिसी को एनालाइज करें, दैट इज कोठारी कमीशन, तो उसमें 6% ऑफ द GDP प्रपोज किया गया था एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करने के लिए. वी आर टॉकिंग इन 2022, बट टिल डेट दैट ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड. एंड इन NEP 2020 अगेन द सेम टर्म 6% expenditure of the GDP on education is proposed. Now you can see that there is a lot of difference. बहुत बड़ा difference है जो पॉलिसी में प्रपोज किया जाता है, जो उसमें से अचीव किया जाता है. So we pray to God that this time we can achieve this target to make our school education as well as higher education much better to our population, to our citizens. So this slide shows that we are in advantage in context to the youngest population. Demographically, India is the youngest country in the world. Half of its population is under 25 and 2/3 are younger than 35. A report published in 2017 says that India will have the world's largest workforce by 2027. More than 1 billion people, accounting for 18% of the global labor force, will be from India. But जैसे हमें ये चीजें मोटिवेट करती हैं, हमारे लिए इनकरेजिंग है, तो इसमें एक बात हमें ये भी याद रखनी पड़ेगी कि धीरे धीरे ये एडवांटेज हमारे से चला जाएगा. जैसे 2022 की बात कर रहे हैं, द नदर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में ये पॉपुलेशन का जो डिविडेंड है, जो डेमोग्राफिकली हमें एडवांटेज है, ये सबसे पहले खत्म होना शुरू हो चुका है. आप 2022 के बाद देखोगे पंजाब और हरियाणा की पॉपुलेशन एजिंग होना शुरू कर देगी. नो डाउट इंडिया के पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब सभी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, वी हैव स्टिल द एडवांटेज. बट जैसे मैंने आपको एक अलार्मिंग बेल बताई है कि इन पंजाब और हरियाणा, दीज नदर्न स्टेट्स, जो पॉपुलेशन को यंगेस्ट पॉपुलेशन का स्टेज है, वो इस ईयर से जाना शुरू कर देगा. इस ईयर तक वो टॉप पर पहुंच चुका है, इसके बाद इट विल गो डाउन. इन द सेम वे after 2027 we will lose this status. The other people will take, other country will take this position. So we have to work
accordingly, we have to work in a short period to develop our young generation for a skilled labor for a better citizen. So APJ Abdul Kalam ji ki agar aap book dekhte ho, Vision 2020, it also talks about this population, this young generation dividend. So we have to read each line of that book and हमें उस पे वर्क करना चाहिए. जो पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी में बताया है, we have to now work on those lines at ground level, जिसमें से टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी लोग इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, each and everyone has to play their role judiciously. So we got this new education policy which is called NEP 2020 after a gap of 34 years. This is the background of this policy. We know that in India, this policy framing work was started in 1948-49. हमें पहला कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, then secondary education commission, then Indian education commission, then main policy that is called National Policy on Education 1968. Then a major change that is a 42nd constitutional amendment in 1906, जिसमें education को concurrent list में डाला गया. Then again good policy which is called policy of 1986 NPE. Then उसका program of action मिला हमें 1992 में. उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी बनती है इस जो NEP 2020 है इस पे काम करने के लिए. After some time that committee is headed by K. Kasturi Rangan, who finally submitted the report to the government of India. So this is a process of coming to the NEP 2020. जब आप सारी NEP 2020 को analyze करोगे, you will see that it is targeting toward the sustainable development goals. अगर आप sustainable development goals को Google से search करोगे, तो आप जो उसका goal number 4 है, that is talking about ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. This is sustainable development goal number 4. So our policy is framed by keeping this goal in front of all the policy makers. This was the team who is responsible to frame all the policy documents, headed by K. Kasturi Rangan. We will not go in detail of this. This was the procedure they adopted. No doubt policy का criticism भी हुआ है. South में कुछ states में हुआ है. Even in the Punjab, in some of the areas, there was some point of जहाँ पे conflict था, language का कोई conflict था. उन सभी बातों पे धीरे धीरे उसको settle down हुआ है. But they are claiming that they have made the policy after a due consultation process. इस स्लाइड में इस चीज को एंडोर्स किया गया है कि they have followed a proper consultation process to frame this policy. So this is very important slide. मैं ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स से एक बात करना चाहूंगा कि इससे पहले आपने इस पॉलिसी के कौन-कौन से इश्यूज पे मेन डिस्कशन कर चुके हो आप, so that I should not repeat those parts. Sir, today is our 11th day, I think, and almost हमने सारे issues पे discuss हो गया. जो भी major issues है NEP का, major sectors है, अगर सब पे हो गया है सर, क्योंकि ये तो मैं टॉपिक बताऊं सर या फिर? हाँ, थोड़ा सा अगर आप बता दो तो इजी हो जाएगा. Yes sir, 1 minute. So that I should not repeat the things. Yes sir, just 1 minute. I think language bilingual इतना ओके होगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश. हाँ सर, इतना ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है. बट सर मैं टॉपिक आपको बता दूं, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं
जिसमें NEP ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, MOOC एग्रीगेशन, multiple pathways for vocational educational training and skills. Yes. NEP and implementation challenges and how to apply change management technique. Yes. Then regulatory system and financing education. Fine. Open learning and internationalization of education. Okay. Nipun Bharat, impact of new education policy on primary education. NEP and its implementation challenges in diverse socio-culture demographic communities in India. Good. And sir, innovation and inclusive classroom, initiative of school and mentoring mission. Okay. And National Research Foundation and special education zones, establishment of academic bank of credit. Okay. And sir, regulation and accreditation of school education and mental health and well-being of students. Fine. So I think you have covered most of the topic, and obviously these topics are interlinked. Yes, sir. Yes. जब आप एक सेशन से दूसरे सेशन में जाओगे तो बेसिकली तो वो 66 पेज डॉक्यूमेंट ही है जिसको आप डिफरेंट हेडिंग्स में कवर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम रेपिटेशंस, बट उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा. यस सर. यस. अदरवाइज सम ऑफ द पॉइंट्स विल बी द रेपिटेशन. फिर भी स्टिल कहीं आपको फील होता है कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, सो यू कैन टेल मी सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. अगर पार्टिसिपेंट को लगता है कि इस पे और डिस्कशन की जरूरत है, दे कैन आल्सो say through the chat box or by unmuting themselves, so that we can spend our time properly, that can be useful for you people and me also. Okay sir, we'll let you know. Thank you sir. So this is the first slide which talks about the timeline. I am hopeful that के पहले भी किसी प्रेजेंटेशन में टाइमलाइन की बात हुई होगी, लेकिन आप जो सबसे पहला इसका एस्पेक्ट देख रहे हो, that is 2021 to 2022. 29 जुलाई 2020 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया. अब जो फर्स्ट ईयर इसका आ रहा था वो था 2021 और 2022. अब इस ईयर में जो सबसे बड़ा कार्य करने के लिए था गवर्नमेंट के सामने, द हायर अथॉरिटीज के सामने, दैट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. अब इस पे एनसीईआरटी ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है. दे हैव सम फोकस ग्रुप्स और डिफरेंट जो SCRTs है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो भी काम कर रही हैं. वहां पे फोकस ग्रुप बन चुके हैं. सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड अ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क. They have targeted that in this year, in 2022, they will complete the work of formulation of national curricular framework for school education. जब ये national curriculum आएगा, we know that last time हमें कब मिला था? Any participant can tell me? Last time हमें national curriculum framework कब provide किया गया था? NCERT की तरफ से या MHRD की तरफ से? Any participant? It will help us to, yes, we got in 2005. That was National Curriculum Framework 2005. अब देखोगे आपके 2005 के बाद आपके स्कूल की बुक्स, आपके स्कूल की पेडागोजी, उसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा आपको. जब 2005 में ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसके बाद डिफरेंट स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे बुक्स को रीराइट किया गया इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. अब जब नया करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, दैट प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन. आजकल आप स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग की बात करते हो, आजकल आप नई पेडागोजी यूज करने की बात कर रहे हो, आजकल आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो. All these were in the National Curriculum Framework of 2005. So that will be a big achievement for a country when we will got new curriculum framework. So as per the new curriculum framework, our school education system is bound to going through different changes in methodology,
changes in textbooks, changes in the reference materials. So हमें ये बड़ी change इस year के end तक मे बी वो document ready हो जाएगा, that is going to affect each and everyone. इसी के साथ जब ये नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन बनता है, उसके साथ साथ एक बनता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. आपको बता सकते हैं कि लास्ट टाइम हमें कब मिला था? एक है एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, उसके बाद एक बना था एनसीएफ टीचर एजुकेशन. एनीवन इन द चैट बॉक्स? आपने बिल्कुल सही बताया पहले कि वी गॉट National Curriculum Framework in 2005. Can anyone tell me when we got National Curriculum Framework for Teacher Education? Any idea? 2005 के बाद ही आया था. If you can add, if you can tell me the year when we got National Curriculum Framework for Teacher Education, any participant? You must be knowing this because जो टीचर प्रिपेयर होते हैं, जितने टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं, they have to follow that curriculum framework. One is for school education, another is for teacher education. Okay, I will tell you, we got in 2009. 2005 में हमें स्कूल एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क मिलता है. In 2009, we got National Curriculum Framework for Teacher Education. But now, in this policy, they have focused that these both should be completed in the same year. Both should be in the hands of the stakeholders by the end of 2022. So this is the main target related to our school education, and no, it will also make impact on our higher education. So other things आपने cover कर ली होंगी during your last sessions. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे skip करूँगा. ये हमारे पास 20 years की एक timeline दी गई है. इन 20 years में इस पॉलिसी को fully operational करने का टाइम स्पैन दिया गया है. डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं. डिफरेंट हमारे लिए हम उसको बोल सकते हैं कि मेन टारगेट्स है जो हमने अचीव करने हैं इन द नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years और नेक्स्ट 20 years. Then these are the major changes proposed in the policy about the school education. जैसे आपने प्राइमरी पे पहले ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हो, तो NEP टॉक्स अबाउट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसको हम प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं. उसमें बोल रहे हैं कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का भी पार्ट है कि हमें 100% बच्चों को स्कूल में लेकर आना है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज की डेट में भी more than 2 crore students are out of school. जब आप रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखते हो, different reports, Pratham, Asar reports are showing this data that more than 2 crore students are still out of the classes. So हमें इन 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अपने स्कूल्स में लेकर आना है. दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस NEP 2020. देन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात कर रही है पॉलिसी. आज तक हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था कि आप 10th क्लास तक सेकेंडरी एजुकेशन था. 10th क्लास के बाद +1 एंड +2 आपका सीनियर सेकेंडरी था. तो 2 स्ट्रक्चर में चलती थी आपकी एजुकेशन, जो पैन इंडिया चलती थी. इसके बिना जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास प्री प्राइमरी सेक्शन भी चलता था. इन बिटवीन आपने SSA और रमजा के इम्प्लीमेंट होने के बाद मिडल, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी
ये तीन डिफरेंट पैरामीटर्स भी देखे थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या माना जाता है कि 10th क्लास तक एक सिस्टम है, 10th के बाद 10+2 का सिस्टम है. दिस वाज द ओल्ड सिस्टम. बट नाउ इन दिस NEP 2020 स्कूल एजुकेशन का टोटल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू चेंज. They have proposed 5+3+3+4. This is a new structure which will be in all the schools irrespective of the management. That can be private school, that can be a government aided school, that can be a government school. So this is the proposed system. Sir, will there be same textbooks from Kashmir to Kanyakumari? A very important question. As per the NCERT, all these books will be same from Kashmir to Kanyakumari in most of the subject areas. But still, जो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते. अगर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देखते हैं, we have diverse population. So whenever the new curriculum framework is framed, every time there is some scope for the state, because on the second line education is in a concurrent list. Center and state both are responsible and both have some powers in connection to education. So अगर आप बोलो कि बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, that is not possible. That's why we frame national curriculum framework by taking that curriculum framework as guidelines. The states can frame their content as per their context. अगर आप कश्मीर की बुक्स देखोगे तो कश्मीर की बुक्स में कुछ सब्जेक्ट एरिया में वहां के लोकल कल्चर की एग्जांपल्स आ सकती हैं. हाँ, यस, डेफिनेटली एटलीस्ट मैथ एंड साइंस टेक्स्ट बुक्स कैन बी सेम 100%. These subject books will be same. Yes, this will be taken care in this NEP 2020. The math and science areas will be same. I'm talking about the languages. I'm talking about the different kind of content in these books. The main topic will be same. Yes, it will be taken care definitely. Then board exams to test core concept and application of knowledge, common standard of learning in public. And this is a very big thing which is proposed in this policy, that के चाहे पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा है, उन दोनों के लिए बेसिक फैसिलिटीज सेम होंगी. अभी इस बात को थ्योरेटिकली हम एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वी नो दैट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ एटलीस्ट जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पहले 5 साल का ऐड किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज से पहले इट वाज नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल्स में तो बड़े ऑर्गेनाइज वे से दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे सिर्फ आंगनवाड़ी सिस्टम चलता था, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं था. तो इस पे जो गवर्नमेंट कंसंट्रेट कर रही है, दैट इज गुड थिंग. देन कम्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन दे पाएं और इक्वल एजुकेशन दे पाएं बाय 2030. देन गिफ्टेड चिल्ड्रन को प्रॉपरली टेक केयर करें ताकि वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें. देन जेंडर इंक्लूजन फंड, दिस इज अनदर प्रपोजल इन द पॉलिसी दैट in our country the girls are not getting due advantage or the due opportunities in the present system. No doubt in the earlier policies also, KGVB, this is a scheme, Kasturba Gandhi Balika Badhu schools. In many parts of India these schools were opened. Now this policy is saying that this project will be covering more areas to provide a proper opportunities to girls
in the school education. Girls and transgender learner. Yes, it is talking about transgender also, because nowadays in the south or in the best areas, there are many studies on transgender also. Now we have to consider three gender. That is very good point raised by Ivan John, that girls and transgender learner must be, when we talk about the inclusive education, it is talking about transgender also. In the policy also the word is mentioned. So now we have to admit the girls as well as the transgender population when we are talking about the inclusive education. Very good point raised by Ivan John ji, please. Then this policy is talking about the vocational education. That is very promising thing of this policy, क्योंकि ये बात बोली जाती है कि इंडियन सिस्टम में आफ्टर डूइंग 10th क्लास और +2 the students are not able to find a good job. The reason being जो हमारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है that is more in a theoretical nature, not in a practical nature. अब इस बात के लिए 6th क्लास ऑनवर्ड जो प्रपोजल है कि जो करिकुलम होगा वो टोटली रीशेप किया जाएगा, जिसमें अगर बच्चा कोई पेंटिंग कर रहा है या बच्चा कोई स्टिचिंग कर रहा है या बच्चा कोई और वोकेशन की तरफ देख रहा है, तो वो एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम माना जाएगा. उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, उसको को करिकुलर एक्टिविटी नहीं. That will be a part and parcel of the curriculum. He will get marks for that particular skill-based course. So it is proposed that कि जो भी बच्चा आपके स्कूल से complete करेगा education, he will be master of at least one skill. A bouquet of skills will be provided. वो आपको डिफरेंट स्किल्स को आपके नेशनल करिकुलम में आपके सामने रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वी हैव टू फोकस ऑन एनी वन स्किल फॉर ईच स्टूडेंट. Yes, absolutely right, Ivan John. It reminds me of Gandhi's educational philosophy of community-centered. Basically, that was a beautiful concept of basic education given by Mahatma Gandhi ji. We are unfortunately didn't able to convert that basic education in our schools. Now the policy is talking about these things. So hopefully अब इन बातों पे practically काम होगा. इसमें कुछ चीजों के लिए ना अगर हम बोलें तो we are also responsible. As a school teacher, as a school principal, as a college teacher, we are also responsible for failure of some of the things, like continuous comprehensive evaluation system, CCE. That was a beautiful document. I think at that time Kapil Sibal was the minister who is dealing with the MHRD, irrespective of any party line. That was a beautiful document prepared by that government. Mr. Kapil Sibal was leading for CCE, but unfortunately in our schools, we were not able to understand the document. We were not able to plan accordingly for that scheme. Ultimately, after a few years, government has to take back the scheme, and now it is up to the different schools. Some of the schools are following and some of the schools are not following. But that was a brilliant, that was an excellent document. अब प्रॉब्लम क्या आई उसमें, हमने उसमें प्रोजेक्ट वर्क देखा, तो हमने उस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करवाना है, उस प्रोजेक्ट को कैसे मंथली ईयरली डिवाइड करना है, उस प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों की कंट्रीब्यूशन को कैसे असेस करना है. Our teachers and our principals and our parents were not properly aware about the concept. जब टीचर्स ने evaluate किए प्रोजेक्ट तो उन्होंने प्रोजेक्ट की ब्यूटी पे फोकस किया, उन्होंने प्रोजेक्ट की वर्किंग पे फोकस किया, उन्होंने प्रोजेक्ट कितना अच्छा बना हुआ है इस बात पे फोकस किया, ना कि इस बात पे फोकस किया कि उस प्रोजेक्ट में एफर्ट्स कितने लगे हुए हैं बच्चों के.
मान लीजिए आपके सामने 2 प्रोजेक्ट पड़े हैं। एक प्रोजेक्ट उसके पेरेंट्स ने, उसकी बड़ी सिस्टर, उसके बड़े ब्रदर ने, किसी शॉपकीपर ने, उसने बनाकर सामने आपको क्लास में सबमिट किया है। एक प्रोजेक्ट उस बच्चों ने सबमिट किया है जिन्होंने अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंगली काम किया है। नाउ वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ 2 ग्रुप्स। Around 99% teachers prefer to give proper marks and evaluation to the beautiful project, to the more working project, but they never try to find out the efforts of that team in a particular project. I am taking one example. There are n number of examples where we were not able to plan according to the CCE. And ultimately, the beautiful document didn't get the proper success which it was expected. So we have to see very carefully that whenever we are implementing something at grassroots level, we should try to know the spirit of that particular document. That is very important. Then teachers to be prepared for assessment reforms. I am again talking about the assessment reforms in the coming years. So one question in the chat box, what about night school students who cannot prepare a project? Can you elaborate with night school students? The question is about the night school students who cannot prepare a project. I'm not able to get the main essence of your question about the night school student. That can be a new concept for me also. So please elaborate if you can. Those who are overaged and coming to school, okay, fine. Yes, we have to plan accordingly. Every project should be planned in such a way that is suitable to a particular age group. So we can arrange different kind of work for overaged people. If you are talking about those people who were not able to complete the study at the young age, now they are going to complete, then we have to assign the work according to their interest, according to their age. That is the kind of adaptability we have to do at the local level. So we have to focus on these areas at local level. So जब भी कोई पॉलिसी आपके पास बनती है, कोई डॉक्यूमेंट आता है, दैट इज अ जनरल डॉक्यूमेंट. अब आपके पास 4 बच्चे हैं, आपको पता है कि वो आपका स्कूल अटेंड करने के बाद वो चारों लोग शाम को एक किसी मार्केट में रेडी लगाते हैं. They are doing their jobs in the evening for the daily routine life. अब उनकी लाइफ में अगर वो 4 और 5 घंटे स्कूल के बाद जाकर किसी शॉप पे काम नहीं करते, अपने पेरेंट के साथ काम नहीं करते, दे कांट सर्वाइव. सो अगर ऐसे बच्चे आपको आपके स्कूल में पता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली उस चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, उन जो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में काम आ सके. अब जरूरी नहीं कि उनको सेम प्रोजेक्ट देना है जो अदर बच्चों को दिया जा रहा है. वी हैव टू फाइंड अ वे टू एडजस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. सो द टीचर मस्ट बी अ क्रिएटिव. जब हम असेसमेंट रिफॉर्म्स की बात करेंगे, इसमें पेपर पेन को, इसमें टेस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया. इसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे जज करोगे आप, बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे जज करोगे, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे जज करोगे. सो दीज आर द रिफॉर्म्स इन असेसमेंट. नाउ अगेन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टीचर्स. सो टीचर्स पे किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उस बात को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं. अगर हमें खुद को क्रिटिकल थिंकिंग, खुद को क्रिएटिव थिंकिंग, खुद को प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट की थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसमें कैसी एक्टिविटीज होंगी, कैसे बच्चों को असेस करना है, देन वी विल नॉट बी एबल टू असेस प्रॉपरली. Then the spirit of that document
will not be in a proper manner implemented at a grassroots level. So we have to be very careful about all these documents and all these concepts. सो जे हमने जो बात की थी आपके साथ के एसएससी और समग्र शिक्षा एंड आरटीआई जिनको पिछली 10 सालों में हमने देखा है उनको कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा. अगर आज भी आप देखते हो तो 6 to 8 तक 90%, 9 to 10 तक जाते जाते 79% एंड 11 to 12 तक जाते जाते बच्चों की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितनी रह जाती है 56.5%. सो इट इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउट. तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट आपको नजर आता है. सो द पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव टू कर्व दैट ड्रॉप आउट ऑल्सो. इसमें चाहे आप माने कि आज तक एजुकेशन और वोकेशंस पे कम फोकस करते थे, 10th के बाद बच्चे डिफरेंट फील्ड में काम करने के लिए चले जाते हैं. सो नाउ द पॉलिसी मेकर्स आर सेइंग दैट we will try to introduce vocational education from 6th class onward, so that at the end of the schooling, that is अब आप जब देखोगे स्ट्रक्चर का, हम अगली स्लाइड पे बात करेंगे. अब 8th क्लास के बाद बच्चों के पास ऑप्शंस होंगी. The student can opt different optional subject from 8th onward. अब जो स्ट्रक्चर बना है 5+3+3+4, जो 4 years का एक सेक्शन बना है, दैट इज 8th क्लास to 12th क्लास. अब 10th के बाद एग्जिट नहीं है. एग्जिट कहाँ पे है? जो मेन एग्जिट है दैट इज आफ्टर 12th क्लास. सो इनका फोकस पॉलिसी मेकर्स का क्या है, जो ये ड्रॉप आउट है इसको कम से कम किया जाए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना 8 to 12 ईयर का जो एक ब्लॉक बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको कंप्लीट कर पाए. इस सारी चीजों को कवर करने के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उसमें ये चीजें फोकस की गई हैं स्कूल के करिकुलम के रिलेटेड. पहले तो जो भी बच्चा आपके स्कूल में एडमिट होगा उसको एक पोर्टल के थ्रू उसकी प्रॉपरली ट्रैकिंग किया जाएगा बच्चे का. अगर पैन इंडिया कहीं भी बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके ट्रैकिंग रिकॉर्ड होगा कि बच्चा कहाँ पहुंचा है, किस लेवल पे पहुंचा है. सो दे आर फोकसिंग ऑन ट्रैकिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट. Sir, will there be any age criteria for dropout? Yes, obviously there is no age limit to enter in school education. Every time the policy makers are allowing to enter all the students to complete their education, so they will be not very much strict about the age criteria. अगर कोई बच्चा अपनी 8 to 12 एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, इन बिटवीन ड्रॉप आउट हो जाता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ वे टू कंप्लीट द कोर्स. देन रोल ऑफ काउंसलर in this policy, now in every school we will see the counselor. No doubt CBSE has already given the orders for the recruitment of the counselors, but in practical in many places they are not appointed till now. This flexibility, Mr. Ivan John has said, this flexibility, a brilliant vision of learner orientedness, and also a challenge. We have seen how at UG level there is a hardly even choice-based credit due to structural changes. Yes, fine. Structural changes, keyword choice. They are going to revamp the choice-based credit system also. No doubt CBCS is implemented by the University Grant Commission, but in this policy a hint is given that they are going to change the choice-based credit system also. They will make some modifications in context of the policy. Role of counselor is going to be very important in coming days, and social workers. Then multiple pathway, जिसपे आपका ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, मैं उसको दोबारा से टाइम उस पर स्पेंड नहीं करूंगा. It talks about the open and distance learning. It talks about the
different platforms where a student can complete his or her study. So multiple pathways होंगे बच्चे के पास, less restrictive requirement for opening new private schools. इस पॉलिसी में इसको बाद में एनालाइज कर पाएंगे हम कि कितना ये सही है, कितना ये गलत है. This policy talks about no differentiation between private and public schools. अब अगर किसी ने नया प्राइवेट स्कूल खोलना है तो उसके लिए नॉर्म्स की रिलैक्सेशन की बात कर रही है पॉलिसी. और on the other hand, policy also talks about the funding for private and public institutions, irrespective of the nature of the governance. They are saying that who will provide quality education, they will provide funding in the higher education as well as in the school education. अब वो कितनी फंडिंग देते हैं, कितनी फंडिंग प्राइवेट सेक्टर में जाती है, कितनी गवर्नमेंट जब में जाती है, that is a big question. In the coming years, the answer of these questions will be in front of us. एक और बात पे फोकस किया गया है, they are talking about more active community participation. कि कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कम्युनिटी रिलेटेड वर्क की बात हो रही है. So policy makers are realizing that each and every institution, चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है, that should not work within the walls. It can work by going outside the school also. So proper weightage and जो community oriented project है उनको curriculum का part बनाया जा रहा है. These are the major changes. Then जब हम curriculum and pedagogy पे focus करते हैं, I find these 4 things very important. Learning should be holistic. हम जानते हैं कि हमारे 3 main domains हैं. One is cognitive, another is cognitive, and last one is affective. Whenever we talk about the all-round development of students, तो 3 domains पे काम होता है. एक को ज्ञानात्मक बोलते हैं, एक को कार्यात्मक बोलते हैं, इसको भावात्मक बोलते हैं. Cognitive, cognitive, and affective. Till now, our education is more focused on brain, on cognition, on cognitive aspect. Now, the policymakers are saying that time is gone for focusing on only one area. We have to focus on cognitive, as well as affective domains of the behavior. For that purpose, the policy talks about holistic education. The policy talks about the focus on these 3 domains: cognitive, and affective. Then integrated. Policy talks about integrated education. इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या है? जैसे पहले क्या होता था, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन वाज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अब तीनों चीजों को सेपरेट देखा जाता था. वोकेशनल एजुकेशन को बिल्कुल डिफरेंट वे से देखा जाता था. तो अब पॉलिसी किस बात पे फोकस कर रही है कि all these things, community work, the special education, the kind of co-curricular activities, that should be a part and parcel of the curriculum. इनको अलग अलग देखेंगे तो हम इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. हमारे लिए क्या होता है, we always think that this is curricular thing, this is more important, this is extracurricular, this is less important. So we were not able to develop an integration of curricular and co-curricular activities, of academic work and a social work, of academic work and a community work. So the policy is talking that we have to follow an integrated approach in these different areas, integrated approach in different subjects. How science, math, language, SST can be integrated together.
So policy is talking about the integrated curriculum to be developed for schools as well as colleges. Then third is to making learning more enjoyable. जैसे अब इसमें पहले 5 साल का जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, वो स्ट्रक्चर बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. in those 5 years the policy says that कि बच्चों का जो फाउंडेशन ईयर है उसमें जो पहले 5 साल का पीरियड है बच्चों के लिए, वो प्ले वे है बेसिकली, जिसको मॉन्टेसरी मेथड बोलते हो आप, जहाँ डिफरेंट नेम्स के साथ ऑल ओवर इंडिया उसको यूज किया जाता है. तो उसमें कंटेंट सेकेंडरी है, तो उसमें बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की प्ले एक्टिविटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो इट टॉक्स अबाउट मेकिंग लर्निंग मोर enjoyable. There is one question. Sir, I have a question. There was a time when one used the term extracurricular, then the thinking is to use a label co-curricular. But I have noticed that you say, and if I'm not mistaken, even NEP 20 we gone back to using the label extracurricular. I think you are talking about the word extracurricular in NEP 2020. Okay. So when you will go in detail about the policy document, you will find that they are time and again saying that when we consider one activity extracurricular, it is not able to get our proper attention. Like 2 words. एक आपके पास वर्ड है करिकुलर, एक आपके पास वर्ड है एक्स्ट्रा करिकुलर. अब मोस्ट ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स as well as parents, they are not able to give due importance to extracurricular activities because the word extra, they always think that this is extra, these are the main activity, these are the extra activities. So NEP 2020 is talking about that instead of giving a separate name, instead of giving a separate identity, all these activities should be part and parcel of your curricular activities. You can give one assignment to the students, one work to the student, which will be focused upon different kind of domain of objectives. That can be focusing upon affective domain. But instead of saying it an extracurricular activity, you considered it as a co-curricular activity. So this is the main idea behind avoiding that particular word extracurricular. So hopefully we will be able to reach to that level of thinking where we can plan such activity in such a way that it should be presented to the student in an integrated way and in an enjoyable way. So the last one is engaging. That is very important, to engage the students in learning process. So policy is also talking about this thing very carefully, that all the learning process should be interactive. I am very happy to see that you are putting different kind of questions in chat box. That makes our session an interactive one. Otherwise मैं आपको कोई उपदेश दूं क्योंकि खुद आप टीचर्स हो, इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपने तो बहुत बच्चों को ऑलरेडी उपदेश दे चुके हो. सो दीज सेमिनार्स, दीज एफडीपी शुड नॉट बी अ लेक्चर और डिस्कोर्स जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन बोल रहा है, देन अदर आर द पैसिव लिसनर. वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ modes and ways to interact with each other. Now we have chat box. You are wonderfully participating in whole session. So it makes our learning enjoyable and engaging. अगर हम face to face mode में होते तो I think we can discuss more issues. I will be then I will be able to see the face expression, the attention of all the participants, and accordingly I can frame some questions. So on the one side हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम ऑनलाइन मोड में बैठे हैं. On the other hand, it is also good thing because right now I am a COVID positive.
So अगर हम फेस टू फेस मोड पे होते तो we were not able to interact with each other. But due to this online mode, sitting in Ludhiana, I am talking with you people in a different part of the country, and even being a COVID positive, I'm able to interact with you people. So both things has advantages as well as disadvantages. But it is wonderful to see your participation, so that we can discuss it properly. So the next point is enjoyable, engaging. This is the main diagram. You must have seen this diagram or this picture in different platforms. So till now, this was the structure, existing academic structure. Like in this picture, you are seeing that there is some blue color part of the diagram or the picture, which is talking about the pre-primary education. In the existing academic structure, in some of the places it is in an organized way. अगर हम अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं वहां पे जो ब्लू पोर्शन यूज हो रहा है, लेकिन most of the government schools they are saying that they have developed a system to deal with these students, but actually in a practical shape it is not working, or if it is working, it is not working properly. So then the big portion, that is a 10-year education, starts from 6th year. 6 year की एज में शुरू होती है और नॉर्मली 16 में खत्म होती है. दैट इज अ 10-year block. Then 2 year, that is called the +1+2 system. Now in NEP 2020, all these portions are divided into 4 parts. First one is foundational, which will be of 5 years. उस 5 years में से 3 years जो है बच्चे के, फर्स्ट 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम एज 3 से लेकर 6 साल की एज का बच्चा जो होगा उसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, इन एरियाज में उस बच्चे की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी दी गई है इन इंस्टीट्यूशंस को, जिसको ऑर्गेनाइज वे से बना रहे हैं वो 3 year block. Then in that block also, that is a full block of 5 years, 5 साल के ब्लॉक में से 3 साल, 3 से लेकर 6 साल तक बच्चा सिंपल प्लेवे के फॉर्म में उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. देन इन नेक्स्ट 2 years ही विल कंप्लीट क्लास 1 एंड क्लास 2. तो अगले 2 सालों में बच्चा जब वो 8 साल का हो जाएगा तब तक वो 3 साल अपने आंगनवाड़ी के और 2 साल अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को कंप्लीट कर लेगा. लेकिन इस फाउंडेशनल स्टेज पे टीचिंग मेथड एक्टिविटी बेस्ड होगा, टीचिंग प्लेवे मेथड से होगी और कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा एज पर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट. इन दीज 5 years the main focus will be interaction of one student with another. जैसे हम बच्चे घर पे खेलते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि घर की बजाय अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ लर्न करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक डिफरेंट लेवल पे हो सकती है. उसकी इंटरेक्शन से वो बहुत कुछ सीख सकता है. जहां पे कोई भी फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग को प्रपोज नहीं किया जा रहा, इन दीज 5 years the main focus is on the activity of the student. This is the main focus. अब इसमें मैं जैसे पहले बता रहा था, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, that is again a big question. हमारे प्राइवेट स्कूल्स में आज भी देखते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है बच्चों की, LKG, UKG या नर्सरी क्लासेस भी, वहां पे भी अननेसेसरी राइटिंग पे, वहां पे भी अननेसेसरी क्रैमिंग पे फोकस किया जाता है. हम ये सोचते हैं कि ये करने से शायद बच्चा जब तक फर्स्ट में एंटर करेगा वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग थिंकिंग. उस टाइम में
जितने बच्चे को फ्रीडम दी जाए, जितनी बच्चे को प्ले एक्टिविटीज करवाई जाए, उसकी डेवलपमेंट बेटर होगी एज कंपेयर टू कंट्रोल एनवायरनमेंट. सो वी हैव टू टेक utmost care about these 5 years. Starting from 3 to 8 years, this is a foundation stage. जो भी, अगर आप किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि स्टूडेंट कैन लर्न मैनी लैंग्वेज. अगर आप वो लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो वो आप रीडिंग राइटिंग से नहीं सिखाओगे. जितने इंटरेक्शन बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज के साथ करेगा, अलग अलग लेवल के बच्चों के साथ बातें करेगा, तो उससे वो लर्न करेगा. ना कि अदरवाइज वन लैंग्वेज कैन ऑल्सो क्रिएट हर्डल टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज एट लोअर लेवल. अगर आप हायर स्टेज पे बात करते हो, अगर आप एक ग्रेजुएट बच्चे को इंग्लिश की हेल्प से और लैंग्वेज टीच करते हो, देन वन लैंग्वेज हेल्प टू लर्न अनदर लैंग्वेज, then there is a different type of concept. But अगर आप फाउंडेशन स्टेज पे बात करते हो, फाउंडेशन स्टेज पे दो लैंग्वेज एक दूसरे को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है जब उनकी राइटिंग पे फोकस करेंगे हम. स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन टू पार्ट्स. जब वो हायर एजुकेशन में जाकर एक लैंग्वेज से दूसरा सीख रहा है, देन फर्स्ट लैंग्वेज असिस्ट टू लर्न सेकंड लैंग्वेज. बट एट ग्रासरूट लेवल, एट फाउंडेशन स्टेज, if we will follow the reading, writing, speaking, listening method and more focus on reading and writing, then it can create problems. So आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि उस स्टेज पे आप बच्चे को 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज भी सिखा सकते हो, लेकिन उसका सिखाने का वे ऑफ टीचिंग विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. It will not focus on reading and writing. It will focus on listening and speaking. So this is main important from the point of view curriculum as well as the pedagogy. Then second stage will be preparatory stage. That will be about 3 years. From class 3rd to class 5th, 8 से 11 साल के बच्चे की एज होगी. क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक वो कवर करेगा. यहाँ पे प्ले और जो एक्टिविटी मेथड है वो कंटिन्यू रहेगा. इसके साथ साथ डिस्कवरी मेथड को ज्यादा फोकस किया जाएगा और इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग पे एग्जामिनेशन, यहाँ से इनफॉर्मल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 3rd टू क्लास 5th, बट मेन फोकस विल बी ऑन द एक्टिविटी एंड इंटरेक्शंस. देन कम्स द नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड द मिडल स्टेज. दैट इज ऑफ 3 years, class 6 to 8. Here the big change is the introduction of vocational education. जब बच्चा 6 क्लास में एंटर होगा तो उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा. उसका मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन विषयों पे, इन सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा. एंड उसमें बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड. देन जब बच्चा 8th क्लास कंप्लीट करेगा, देन ही विल बी गिवन चॉइसेस. अब जैसे जो चॉइसेस बच्चों को 10th क्लास के बाद मिलती हैं, इन द न्यू सिस्टम स्टूडेंट विल गेट अ चॉइस एट द एज ऑफ 14 years. It means when he will complete 8th class, 8 plus 6 is 14, he will be given choices to select different subject. Here, a variety of subject will be introduced. Here, the different kind of subject will be offered to the student and student can choose. ताकि वो 8वीं क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक स्पेसिफिक एरिया को पकड़ सके. अब इसमें एक और एडिशन है. मान लीजिए एक बच्चा साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट की चॉइस करता है, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन ड्राइंग और वेरी गुड इन डांसिंग. नाउ ही विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट along with 2 subject. One is optional subject, one is dancing and painting. So in this way, in the new system, you will get
a variety of subject up to the graduation level. You can choose a particular area of your study, but if you have different kind of talent, you can also grow your talent. You can also develop your talent along with your main subject. A student of science can also read literature. Student can also take one subject of literature. So such kind of vocab will be provided to the students. These are the major curriculum and pedagogical focuses upon the school education. Then इसके बाद इस स्लाइड पे कुछ बातें हैं कि करिकुलम को रिड्यूस करने की बात हो रही है, पहले से कम होगा करिकुलम. Yes, definitely. Priya Sawant ji ने पूछा है कि sports will be part of one of subject. Definitely. From earlier stages, from the foundation stage, they are focusing upon sports. Sports is the main area. Sports, art, indigenous languages. These are the main focus area of the NEP 2020. Along with the major subject, they are giving due importance to these kind of sports, yoga, then your art and your traditional language system. They are giving due importance to these things. So you are very much got your answer that sports will be part of your main subject or not. That will be definitely a part. Then comes skill-based curriculum. As we have already discussed that from the 6th class onward, the curriculum will focus upon the skill development. अब आप बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करोगे, करिकुलम को पहले से रिड्यूस किया जाएगा. रिड्यूस करने के साथ साथ स्किल बेस्ड करिकुलम पे फोकस किया जाएगा. एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी पेडागोजी की जब आप बात कर रहे हो. Competency based learning. This is also very important concept introduced in this particular policy. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले भी इसकी बात कर रहा था, अब इस पे और फोकस आया है. दैट इज अ कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन. देन असेसमेंट टूल. असेसमेंट में एज ऑफ फार, आई थिंक जब हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे तब हमने इसकी बात की थी कि there will be different types of assessment. Assessment can be assessment as learning, assessment of learning, or assessment for learning. So इस पॉलिसी में भी इन तीनों चीजों पे फोकस किया गया है कि assessment as learning, of learning and for learning, तीनों तरह की assessment हो सकती है. देन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जैसे मैंने अभी बताया है आपको. मैम प्रिया का क्वेश्चन था स्पोर्ट्स एजुकेशन पे, प्रिया सावंत जी का. तो आई थिंक दीज 2 पॉइंट कवर योर क्वेश्चन. पॉलिसी टॉक्स अबाउट आर्ट इंटीग्रेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन. देन नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, between vocational and academic streams. तो आप जब पॉलिसी को देखोगे, you will find that policy talks about all these things in an integrated manner. आप स्पोर्ट्स की भी इंटीग्रेशन की बात देख रहे हो, आर्ट की भी इंटीग्रेशन की बात देख रहे हो, तो इसमें से आप एक चीज को कंसीव कर पा रहे होगे कि now these things will be a part of the curriculum, not extra curriculum. Our textbook in Maharashtra have included learner competency for each unit within a good. That's good. So on the same line, in all over the India, the NEP 2020 is talking about the competencies. That is good thing that Maharashtra has already started. In many of the areas, Maharashtra is leading. No doubt Kerala has a better literacy rate, but some of the innovations I have seen in the urban areas in Maharashtra. No doubt in the rural areas, there is need of improvement in school as well as higher education. But in urban areas, the Maharashtra is performing very well.
in context of school as well as colleges. So these are the changes in school system with respect to curriculum and pedagogy. मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेज पे बड़ा इशू भी बना था जब पॉलिसी आई थी, तो उनको रिजॉल्व भी किया गया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हमारा पहला था उसी पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है, पाली, संस्कृत, उन पे भी फोकस दिया गया, उनके भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अभी जो हम बात कर रहे थे कॉम्पिटेंसीज की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, सब्जेक्ट के इंटीग्रेशन की, इन बातों पे मेन फोकस किया गया है इन NEP 2020 आल्सो। सो अ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम रूटेड इन इंडियन एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा वो आपको एक नेशनल लेवल की गाइडलाइंस देगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको मेन बेस बनाते हुए द स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन आल्सो ऐड द कंटेंट इन देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट फॉर ग्रेड 6 to 8 दैट विल बी डिजाइन्ड बाय NCERT। अब इसमें जो बेसिक टॉपिक्स होंगे या सब्जेक्ट होंगे दैट विल बी सेम, जैसे हमने पहले डिस्कशन की थी चैट बॉक्स में। इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ द एरिया curriculum will be same, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। The policy talks about reduction in curriculum. Policy is talking about the core essentials, सब्जेक्ट हर एक करिकुलम के होंगे। उनके बाद क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस होगा, देन इंटरेक्टिव क्लासेस पे एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। Curriculum and pedagogy to be transformed by 2022 to promote skill-based and minimum rote-based learning। जैसे हमने पहले बात की है, हमारा करिकुलम भी रिड्यूस होगा और करिकुलम में फोकस भी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा होगा। सो revision of NCF for school education and NCF for teacher education by 2021, इसको हम पहली स्लाइड पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Okay, there is one more question. Since there will be one board, one nation, what will be guidelines for private and government aided schools? Also, there are many night schools and colleges. What will be their future in the new policy? As we have already discussed that there will be a multiple forums to complete the education. So it will definitely take care of the student who are not able to attend the school at daytime. So definitely policy will take care. Since there will be one board, one nation, no such type of thing is implemented or approved in the policy, one board, one nation. Different boards will exist, no problem about that. In the higher education, they are talking about one regulatory body, that is HECA, Higher Education Committee जो बनेगी. लेकिन at school level, the different boards will exist. The NCF पहले भी थी, NCERT अब भी है. जो national curriculum framework बनता है, we have to adopt our state curriculum as per the national guidelines. Because मैंने आपको पहले भी बताया है कि education is a concurrent list. जब concurrent list में होगी, तो you cannot ignore the role of state authorities. The state will always be a key factor in the education, but state has to work according to the guidelines of the center or the national body, that is NCERT. Then next question, I fully support the goal of scientific temperament, and especially as I am atheist too, I find that the pushing of leisure activity in learning space goes against the value of scientific thinking. Definitely, this is a important question because scientific temperament अगर हम बच्चों में develop कर पाएं, तो that will be a biggest achievement.
अगर आप एजुकेशनिस्ट को देखते हो, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू, चाहे आप महात्मा गांधी, चाहे आप राधा कृष्णन, या और भी बी आर अम्बेडकर, आप इन एजुकेशनिस्ट की लाइफ स्टडी करते हो, इनकी रिकमेंडेशन, इनकी बुक्स में आप इन डिटेल जाते हो, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट. So we should take care the spirit of scientific temperament, and as a teacher, it is our prime responsibility. Because as per constitution, in any school, we cannot provide religious education. No doubt, directly or indirectly, a particular school ideology affect the students. But in any way, it should not be a direct impact on the student's mind. They should be free from any kind of religious education. Religion taught us so much value system, but it is not the work of the institution. The particular institution should not promote a particular ideology. We should develop a scientific temper among our students so that they can become a good citizens. So I think someone has raised hand. Is it possible to give them the audio control? I request the organizers that I think one or two person has raised the hand. Now the hand is not visible. So in future, if they raise hand, so please give them audio control so that we can talk with them. So coming to the next point, it is again, we have covered many things. 2-3 main things are missing from that slide. One is a bagless days. NEP 2020 proposes that in every academic year, there must be some bagless days where student can come without their school bags. They can interact with each other. They can learn from each other. And along with these bagless days, they're talking about peer tutoring. मेंटरिंग को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है NEP 2020 में, जहां पे मेंटर मेंटी जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिस्टम होता है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट जैसे हमारी क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट हैं, शायद 40 स्टूडेंट की क्लास में बच्चा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर ना कर पाए. तो वी हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ मेंटर मेंटी रिलेशनशिप in a more organized way. Then it is talking about okay, bookless bags. Yes, it can be. It can be. The basic essence or spirit about this concept of bagless days and promotion of peer tutoring is that let the student to be free from the burden of the books. Let they learn from experiences. So experiential learning will be promoted when there are bagless days. So, Madam Priya Sawant, can you please mute yourself? I think by mistake. Sorry, sir. Sorry. No issue. I think by mistake you have unmuted yourself. Okay. Then comes the use of technology. अगर आप पूरा 66 पेज का डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप पे खोलोगे, you just make a simple search. You put technology in a search box and you will find that more than 80 times in 66 page document, more than 80 times you will find the word technology. So you can easily understand that in the coming decade, that technology is going to impact our classrooms, our lives, our school system, our higher education system on a very large scale. आपको उसके लिए प्रॉपरली रेडी होना पड़ेगा. जैसे कोरोना पैंडेमिक है, अब मैं इसको ये मानता हूं कि ये कोरोना पैंडेमिक कभी भी खत्म होने वाला नहीं है. नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना पैंडेमिक. जो कोरोना पैंडेमिक में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो चुकी है, जहां जहां पे टेक्नोलॉजी को हमने यूज कर लिया है, वो हमेशा के लिए पार्ट एंड पार्सल बन जाएगी. द इफेक्ट ऑफ कोरोना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विल बी फॉर लॉन्गर टाइम.
We can't say that online classes आएंगी और चली जाएंगी. No. Now these things will be part and parcel of our school system. We have to admit it. अब बहुत से टीचर्स होंगे, रिस्पेक्टेड टीचर्स और हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो बहुत टेक्नो से भी नहीं होंगे. इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट अ टाइम टू put ourselves in the stress or strain. We should take it a learning curve. We can learn each and everything with a positive attitude. तो यहाँ पे जो young people है और जो थोड़ा experienced people है, they have to work together. Young people can help in technology. The experienced one can help in the conceptual clarity. So if we can work as a team in our institutions, then we can do wonders. Then we can easily adapt with these technological changes. So we have to make teams in our colleges, in our schools, 2-3% very techno savvy, 2-3% very experienced faculty. So such type of teams can be an asset for your institutions. So we have to use technology in coming years. The policy is talking about these experiential learning. All these things are in focus in coming years by the authorities. Then we have covered many things. One is a PERC, performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development. They are going to develop national level agencies also for the assessment, like NTA. National Testing Agency will work to offer a high quality common aptitude test to eliminate. इस पे बहुत डिस्कशन भी हो रहा है कि NTA क्या जो रूरल एजुकेशन से पढ़ के बच्चे आएंगे, जो अर्बन से आएंगे, क्या दोनों को NTA केटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? There are some questions, and the people are also trying their best to frame it in such a way that it can cater diverse population. क्योंकि जब भी कोई चीज आप इंट्रोड्यूस करते हो, there are some positive points and there are some negative points. So the people, I met one person who is in the focus group at NCRT level. They said we are also considering all these points. We are getting feedback that how a system of national level can take care of a particular student in the rural and the backward area, in the tribal area. So we are considering all these points when we are framing the national level guidelines. So hopefully they will look into the diversity of the country and the developed area and the underdeveloped area of the nation, so that a particular national policy can cater all types of students. Then next is टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, टीचर्स को मोर ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है. मैडम कुलविंदर कौर, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ. Okay. Then the policy is talking about more autonomy to the teacher. जब आप pedagogy की बात कर रहे हो, तो पेडागोजी में और करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसी गिव्स मोर फ्रीडम टू द टीचर. पहले भी हम ये मानते हैं कि आपको कोई भी गाइडलाइंस आपके सिर्फ क्लासरूम के बाहर तक होती है. व्हेन यू एंटर्ड इनटू अ क्लासरूम, यू आर किंग ऑफ द क्लासरूम. यू आर a king of your class. You can do anything in your class. No one can stop you. So the policy is endorsing the point that the teacher should be given more autonomy in choosing particular pedagogy in a classroom teaching. So this is a good positive change, that king and queen, definitely. You have one of the participant has very particularly said that king and queen, definitely. These kind of things should be in our mind. आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, किंग एंड क्वीन. अगर टीचर अपने रूटीन की क्लासरूम इंटरेक्शन में दोनों जेंडर, चाहे आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हो,
My all examples should include king and queen, he and she. If I will be using such type of terminology in my classroom, then I can say that I am on the line of gender equality. If at the time of teaching, the teacher is giving 90% example from the male dominated society or the boys oriented definitions or the boys oriented duties, then we can't say that the school is promoting gender equality. Yes, so gender inclusivity in language is so important. In the language of a teacher, in the language of the head of the institution, we have to include these things in our behavior, in our culture. जेंडर इक्वालिटी को आप क्लासरूम में, इंक्लूसिवनेस को आप क्लासरूम में टॉपिक्स के थ्रू नहीं टीच कर सकते. Your behavior reflect these kind of things. Your action in classroom reflect these kind of things. So teacher has autonomy to adopt accordingly to provide the best learning experience to the students. So it is expected that teacher will be academic leaders and teachers professional development will be taken care. अब हर एक टीचर के लिए minimum 50 hours of CPD program. This is proposed in the policy that every teacher has to attend minimum 50 hours of continuous professional development program at every stage of professional growth. Then merit-based tenure track system, performance-based promotions. This is also proposal in the policy that instead of year-based promotions, the policy is talking about performance-based promotions. So at each level, your performance will be seen in particular area. Policy is talking about the NPST. That is very important component. You must search on Google. We have less time in this session. National Professional Standards for Teachers. NCRT has already done an exercise at a national level where they are framing some professional standards. So in the coming years, you will face these national professional standard for teacher. You have to act according to these standards. Otherwise, we will not be able to survive in this competitive era. So these are the changes in school system. CPD we have already talked about. Now coming to the higher education. In the next 10-15 minutes, we will try to cover the higher education system. Some of the points are interlinked between the school and higher education, the teacher autonomy, the holistic curriculum, the enjoyable learning. All these things are common to both the sectors, school as well as the higher education. In higher education, the policy is talking about 50% gross enrollment ratio. Right now, we have around 27%. Now you can imagine that how this gap of 23% can be fulfilled in the next 14 years. On the one side, एक side पे policy, the number of institutions को कम करने की बात कर रही है. जैसे हमारे 42,000 कॉलेजेस हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात हो रही है, उनका नंबर्स कम करके 10,000 के अराउंड करने की बात हो रही है. On the other side, the policy is talking about 50% gross enrollment ratio in higher education by 2035. अब इस पे 2-3 बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है. एक तो जो सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस हैं, स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं, they have to convert into multidisciplinary colleges, first thing. और second, आपकी ऑनलाइन एजुकेशन, आपके मूक्स, आपका ओडीएल सिस्टम पहले से और स्ट्रांग होने वाला है. So in the coming years, you will see more growth in the ODL sector, more growth in online courses, and more growth in multidisciplinary colleges. So these are the changes which are going to affect each and everyone. So हमें इनके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए. जहाँ पे हम ODL और ओपन
एजुकेशन कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, वी शुड ट्राई फॉर दोज कोर्सेज, एंड जहाँ पे स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं, वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट दोज कॉलेजेस इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी colleges, and strength of college should also be improved from 200 500 to at least around 3000. They are mentioning one figure, around 3000 an ideal strength of college. उनका जो पॉइंट है जिन मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि जब एक बहुत छोटा सा कॉलेज होता है, एक स्मॉल कॉलेज, दैट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट, that cannot provide variety of subject to the student. So that is the main idea behind proposing a less number of colleges with a large number of students. So instead of small unit, they are focusing upon large units which can provide different kind of facilities, a variety of choice for students in subject areas as well as in other facilities. So I wonder why the Mfil was discontinued. I thought it served as stepping stone toward the doctorate. There were some studies related to the Mfil. Some of the universities degraded the value of Mfil with the wrong practices, with the bad practices. So sometime जब आपको एक particular area से feedback ऐसी आ जाती है, that feedback work against particular area. So I think in case of Mfil, some of the university have done so many bad practices and the quality of the Mfil course was degraded. So that is a big reason the USC has discontinued Mfil in many areas. So in future, you will get a good chance for your doctorate at different level. So these are the policy matters which affect each and every stakeholder. Then next is a holistic and multidisciplinary education. The question which we have already addressed in the school education discussion is कि आपको जब आप स्कूल और हायर एजुकेशन को देखोगे तो you will find a number of courses, a number of subject. So they are talking about the holistic education, a flexibility of choosing a subject, multiple entry and exit point. In like a 4-year degree program, you complete 1 year, you will get a certificate course. You complete 2 years, you will get a diploma. After completing 3 or 4 years, you will get a degree. So in that way, 2 types of program are proposed: UG program, 3-year and 4-year. Most of the program will be a 4-year integrated degrees. Then they are proposing PG program of ranging from 1 to 2 years, then 5 years program. So this is the structure in higher education. And Mfil to be discontinued. We have already said that UC got some reports, negative reports about this course, and that is a main reason for discontinuation of the Mfil. Then credit transfer and academic bank of credit, you have already organized a session on that particular area. तो आप अगर आप different colleges से कोई specific year complete करते हो किसी particular area में, तो वहाँ के credit आपके academic bank of credit में ABC में add हो जाएंगे. तो वो ABC आगे continue चलेगी, जिसपे यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट करोगे. यू कैन गेट डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड ABC. देन कम्स नेचर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हायर एजुकेशन में करिकुलम के अलावा जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रही हैं. Structure which is proposed in NEP 2020. Then this is a very good thing, MERU, Multi-Disciplinary Education and Research University. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेरू को प्रपोज किया गया है. That is very good initiative. It is if it is actually on ground converted into at the ground.
अगर हम इस पॉइंट को प्रॉपरली कन्वर्ट कर पाए ग्राउंड लेवल पे, then it can be a very good initiative. It can bring innovation in curriculum and pedagogy also, such kind of model universities. Then comes graded autonomy की बात हो रही है. Then phasing out affiliation system जो अब हमारा चल रहा है, इसको धीरे धीरे कॉलेजेस को अपने लेवल पे ऑटोनमस बनाने की बात हो रही है, and phasing out the affiliation system in the next 15 years. National mission on mentoring, these point I think you all have covered. Now I will National Research Foundation की बात हुई है, that is very good step. इसके बिना जो स्पेशल बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, these are the point. Establishment of different department for holistic education. So this is very important point, establishment of different department for holistic education. Different department शुरू किए जा रहे हैं, department in language, literature, music, philosophy, then art, dance, theater, education. अब इतने department अगर आपने शुरू करने हैं तो आपके कॉलेज का साइज बड़ा होना बड़ा जरूरी है. That's why they are proposing that standalone colleges should be converted into multidisciplinary colleges. अगर आपने करिकुलम में बच्चों को इतनी वैरायटी देनी है, इतने डिपार्टमेंट ओपन करने हैं, then you have to club the resources. जिसमें उन्होंने रिसोर्सेज शेयरिंग की बात की है, क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस की बात की है, तो करिकुलम में बच्चों के लिए चॉइसेस इंक्रीज होने वाली है और उन इंक्रीज चॉइसेस को एक स्मॉल कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता. फॉर दैट पर्पस दे हैव प्रपोज्ड मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस. देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स दैट ट्रू द एफिलिएशन सिस्टम नीड्स टू गो. University are exploding with enrollment number including IGNO and they can't even handle their number quality. Yes, definitely. Nowadays universities are becoming the degree granting institutions. They're in the policy they are talking about the autonomous colleges. The college should be given autonomy to frame curriculum. अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में आपके बच्चों को पर्टिकुलर एरिया में स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, बट यू कांट डेवलप अ कोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूवल चाहिए, यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडी की में उसको प्रपोजल चाहिए. दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर आइडिया इन योर इंस्टीट्यूशन. सो इन दिस पॉलिसी इट इज सेड दैट in the coming years this affiliation system will go away. Each institution will be given autonomy to frame curriculum in the context of pedagogy with respect to the local needs, so that we can make our education more vocational, more skill based instead of theoretical subject. Then autonomy to innovate on matter of curriculum, pedagogy and assessment. Institution and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment within a broad framework of higher education qualification. जैसे हमने national curriculum framework की बात की है, on the same pattern there will be a broad guidelines for the higher education institution also. On the basis of those guidelines they have to frame the curriculum at institution level. Then जो हमने पहले बात की थी, the policy is talking about revised choice based credit system. These are the major changes they have recommended. Then they are also introducing one skill or a subject, that is cyber security. Cyber security सभी curriculum irrespective of streams, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम है, चाहे साइंस स्ट्रीम है, चाहे टीचर एजुकेशन स्ट्रीम है, they are proposing that cyber security should be a part and parcel of every stream. Then more holistic and multidisciplinary education, जिसमें अगर साइंस स्ट्रीम में बच्चा है तो वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, the particular student, he or she must be given freedom to choose that particular subject. Even the IITs, अभी भी IITs में
जो लिबरल आर्ट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज हैं, उसके सब्जेक्ट टीच होते हैं, वहां पे उनकी ऑप्शंस होती हैं. द पॉलिसी इज टॉकिंग टू include more subject, increasing the scope of the liberal art and humanities in IITs also. Research and innovation पे focus है. Then National Education Technology Forum, जिसकी हमने पहले भी बात की है. So they are going to focus more and more on technology in coming year, more SWAM courses, more content on e-Pathshala. So these kind of things are going to be very popular in coming years. So there is one question: what will the status of night school, evening school? And definitely they will get a proper place in the new policy, because new education policy 2020 focuses to increase the gross enrollment ratio. In connection to schools, they haven't said any kind of reducing the number of schools. They have only proposed in the higher education system to reduce the number of colleges, because the small colleges cannot provide a variety of subject and variety of infrastructure to the students. So in context to schools, the night schools will do, the evening school will work as per the previous practices. Then comes the next point can be credit based courses and community project. जैसे मैंने पहले आपसे बात कर ली है कि community engagement and service, environment education and value based अब curriculum का part होंगे, और उनके क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में ऐड होंगे. अगर आपके किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 40 क्रेडिट है, 100 क्रेडिट है, 140 क्रेडिट है, तो उन क्रेडिट्स में इन चीजों का कम्युनिटी एंगेजमेंट, सर्विस, एनवायरमेंट एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड की भी इंपॉर्टेंस होगी. देन मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री आपको दी जा रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. इसके साथ साथ करिकुलम में ब्रिज कोर्सेज को इंपॉर्टेंस दी गई है. इन हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट किसी डिसएडवांटेजेस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कवर करने के लिए, मान लीजिए आपका कॉलेज है विद्यालंकार कॉलेज, जहां पे कुछ बच्चे आपके बिल्कुल रूरल एरिया से एडमिशन लेते हैं. नाउ दे मस्ट हैव सम लैंग्वेज डेफिशिएंसीज, दे मस्ट हैव सम टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसीज. अब उन बातों को कवर अप करने के लिए द इंस्टीट्यूशन कैन डेवलप ब्रिज कोर्सेज to give them level playing field for all the student. So the bridge courses are proposed in the NEP 2020. More inclusiveness in the curriculum is proposed in the NEP 2020. Yes, as someone has said in the chat box that to fill up the rural urban gap, some of the main requirements are missing in the rural students. It can be a language proficiency, it can be a technological proficiency, and other related things. So such kind of deficiencies, such kind of skill gaps can be filled with the bridge courses. And policy is talking about making curriculum more inclusive. No doubt from the last few years at national level, we are talking about the inclusiveness. But now this policy is talking that the curriculum which will be framed at national level as well as at the institution level should take care the inclusiveness. Then exposure to vocational education at school and at a higher education is given a prime importance in this NEP 2020. So with this slide, I would like to end. These are the few points. I will share the PowerPoint presentation with the organizers. They can share with all the participants so that they can go through these points which are going to affect the curriculum and the pedagogy. When there will be too much emphasis on scientific temperament, then obviously your pedagogy should also promote these kind of things. Multilingualism. They are promoting multilingualism in the policy. So a teacher, जो teacher class में teach कर रहा है, he must be knowing more than one language in the classroom, so that he can address Hindi student also, Marathi student also, and
English student also. Last time I have a visit in the NAC in particular area of Maharashtra, and I have seen that many of the teachers were not very comfortable to talk in Hindi or in English. They were very much comfortable in Punjabi. That is sorry, in Marathi. That is very good thing that mother tongue has an important role in our institution, in our society. But as a teacher, we must love other language also. चाहे वो हिंदी है हमारी जो नेशनल लेवल पे बोली जा रही है, I will not call it a national language because in any document we didn't find it, but at national level language बोलने के लिए हम हिंदी की बात करते हैं. ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज. किसी भी जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना, उसकी नॉलेज होनी अच्छी बात है. मैं इस पे कभी भी इस पॉइंट को एंडोर्स नहीं कर रहा कि आप अपनी मदर टंग को सेकेंडरी प्लेस दें. यू कैन गिव प्रेफरेंस टू योर मदर टंग, बट यू मस्ट ऑल्सो नो अदर लैंग्वेजेस. बिकॉज मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है. जिस भाषा में आप अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर पाओ, मैं उसकी प्रोफिशिएंसी की, मैं उसकी एक्सीलेंस की बात नहीं कर रहा, चाहे मैं हिंदी की कर रहा हूँ, चाहे इंग्लिश, चाहे मराठी की. अगर आपने कोई बात बोली है, वो आपके बच्चों के जेहन तक पहुंच जाए तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है. आप कितना प्रोफिशिएंसी से बोलते हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. नो डाउट जितना प्रोफिशिएंट बोलोगे दैट विल इंक्रीज, दैट विल बी एन एसेट टू योर पर्सनैलिटी. बट अगर आप अपनी भाषा के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा जो आपका मीनिंग है वो आप स्टूडेंट तक कन्वे कर पाते हो, दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो आई थिंक we will develop different kind of language in our day-to-day routine life and in our classrooms. So these are the main points which I think I thought that I discussed with you people in context to school and higher education. Now you can ask any question. We have a very good interaction in between the chat box, in between the session through chat box. Still, you can ask any question from your side. Yes, anyone from participant side want to ask any question from sir? Yes, anyone? Sir, can I ask you one question? Yes, please, please. Most welcome, ma'am. I will stop. No, sir. Just I saw that in NEP they have planned many different aspects for the student, but they have not. I've not seen any planning for the children who are lagging behind. जैसे उनको डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है. वैसे बच्चे तो ऑब्वियसली रहेंगे ना सिस्टम में. Ma'am, when they are talking about the competency based education, then it comes to the shoulders of the teachers. We have to identify the entry level of the student, and as per the entry level we have to put our sincere efforts. आप कभी भी सभी बच्चों को एक लाइन पे कभी नहीं लेके जा सकते. We have to understand the diversity of the students, कि हर एक बच्चे का एक लेवल है. हमारा फोकस क्या है कि क्या बच्चा अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम रीच कर पाया या नहीं कर पाया. We can't take to the student into one line because each one has its own capabilities, its own limitations. As a teacher, जो हमारा टास्क है, we should give our 100% to take the student to his or her maximum potentials. That should be the main target. And if एक और दो स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट आपकी क्लास में वो प्रॉपरली कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, then we have to adopt different kind of ways and means so that we can cater with those students also. Yes sir, वही मुझे लगा कि अभी तक वैसा कुछ आया नहीं था, because मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस के बाद ना, बिकॉज ये यंग जनरेशन उसका मतलब मुझे लगा कि whether they are at that position to decide such things कि they want to leave the education, they want to join a job, वैसा मुझे लग रहा है. मैम वहाँ पे जो मेंटरिंग की बात हो रही है ना, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में स्कूल्स में ला पाए.
आज भी आप अगर एनालाइज करोगे तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट कि स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे. द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग वन और द अनदर पर्सन. जहां तो वो अपने पेरेंट्स की चॉइस के साथ जा रहे हैं, जहां अपने पीयर ग्रुप की चॉइस के साथ जा रहे हैं. They are not able to identify their potentials, their capabilities and decide accordingly. अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले करना है? टू पर्सन. वन इज पेरेंट्स, अनदर इज टीचर्स. अगर टीचर्स ने प्रॉपर मेंटरिंग कर पाए, उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बारे में बता पाए, तो शायद बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा. क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट्स आर नॉट वेरी एजुकेटेड. So the teacher's role is more in those areas where the students are coming from disadvantaged groups. Yes sir. Okay, thank you so much sir. Participants की तरफ से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर से? Sir, you can see in the chat box their session was always. I have noted some of the questions and I tried my best to share the respond to the maximum queries in the chat box during the session. No queries, okay sir, but you can see the session was very informative and very useful session. All the participants very kind to say these words. I tried my best to share a few things which I have learned during this 1.5 years with all the participants. Okay. And I have also learned so many things from the participants. Okay, thank you so much sir. Thank you for accepting our invitation and giving such an informative session to our audience and participants. Thank you participants. We'll meet at 2 o'clock. Thank you sir. Thank you. एक मिनट. Yes sir. हाँ बोलिए ना. टीचर, ये एनसीपी का जो डॉक्यूमेंट है 66 पेज, वो पीडीएफ में अवेलेबल होगा क्या? Yes. है ना सर, बहुत जगह है. आप सेंड करोगे तो अच्छा है. ठीक है सर, मैं फाइनल वो करके प्रतीक सर से आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा देती हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर परगत सिंह सर. थैंक यू. Thank you, Thank you so. Sanjay. Thank Thank you. you, Prateek sir, and all.